Sunridge foods make me happy. So I decided to make cream puffs. Sunridge foods make me happy. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल सेट नहीं हूँ. एवरीथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ ठीक नहीं हो रहा. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, वो मिस हो गया क्योंकि डेट्स मैच नहीं की. एक फ्रेंड की बर्थडे थी, उस पर नहीं जा सकी बिकॉज ऑफ वर्क. कजन्स के साथ एक प्लान था, वो भी मिस हो गया क्योंकि फ़्लाइट कैंसिल हो गई. आई मीन नथिंग इज़ वर्किंग आउट फॉर मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज. फिर मैंने सोचा कुछ ऐसा करूँ that will lift me up and make me a little happier. And thanks to Sunridge Foods for this platform, which makes me really happy and enables me to make others happy as well. So today I decided कि अपने आप को इस low phase से निकालने के लिए कुछ ऐसा बनाया जाए, which is a mix of everything that I love. Fruits, cream, chocolate. So I decided to make cream puffs. क्योंकि उसके अंदर मैं कुछ फ्रेश फ्रूट भी डालूंगी, उसके ऊपर चॉकलेट भी होगी, उसके अंदर व्हिप्ड क्रीम भी होगी, एंड इट्स रियली इजी टू मेक. सो लेट्स बिगिन. शुरू करने से पहले यू नो द 4 स्टेप्स दैट आई डू. ओवन ऑन करें, प्री हीट इट, लेट्स पुट इट ऑन. आज मैं थोड़ा सा टेम्परेचर डिफरेंट रख रही हूँ. यूजली आई बेक थिंग्स एट 350 डिग्रीज, लेकिन आज 375 डिग्रीज फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर रखेंगे. सो लिटिल मोर देन 180 डिग्री सेल्सियस एंड 90 मिनट्स. एप्रन मैं पहन चुकी हूँ. आई वॉश माई हैंड्स, माई हेयर इज टायर्ड. सो लेट्स बिगिन. द स्टार ऑफ टुडेज रेसिपी, Sunridge मैदा. I only use this maida for baking actually. All my recipes, my cakes, my puddings, everything that I use this for, they turn out exactly the way I want them to. क्यों? क्योंकि इसकी quality बहुत consistent है. It's processed and packaged in a state-of-the-art facility using Swiss technology, zero human contact, fortified with iron, zinc, vitamin B12 and folic acid. So it's hygienic, it's healthy and the quality is always the same. तो ये हम actually डालेंगे after our first step, and the first step is to boil water. पानी मेरा यहाँ पे है. I have a pan on the stove. 1 cup of water. जब तक ये boil हो रहा है, I'm going to take out my butter. So I tell you guys every time कि ये जो butter की टिक्की होती है, I call it a टिक्की, this size, this is equal to 1 cup. तो मैं half cup use कर रही हूँ. That's why I'm only going to slice it into 2. Where are my knives? Right there. This goes in. बटर को वापस रखते हैं. Also, there's a really cute and different name for this, for the pastry जो हम बना रहे हैं cream puffs के लिए, and that is choux pastry. लिखा उसको जाता है CHOUX, but it's pronounced as choux, if you were wondering. Okay, let's melt this. जब ये melt हो जाएगा, I'm going to put some salt. और फिर डायरेक्टली हम मैदा इसके अंदर डाल देंगे. Salt. It's enough. I have to thank you guys for all the feedback you give me. I love it, you know. Appreciation and feedback is what we all live for, right? और आपके सवाल भी बहुत अच्छे होते हैं, सबके. Today I had 2 really technical questions. किसी ने पूछा कि what is the difference between heavy cream and whipped cream? Yes, that's a very important question. Heavy cream, the name speaks for itself. Heavy cream में fat content ज़्यादा होता है, and जो whipped cream होती है उसमें milk fat content कम होता है. So in heavy cream there's about 36% fat, and in whipped cream it's about 30 to 35%. Okay, the butter is melted. मैदा डालते हैं इसमें.
Another question I got was कि cake flour और all purpose flour के बीच में क्या फ़र्क है? Like this is all purpose flour. तो all purpose flour आप किसी भी रेसिपी के लिए यूज़ कर सकते हैं. But cake flour के अंदर baking powder पहले से मिला होता है. So that can only be used for cakes. That's the difference. I'm putting this directly inside. And you keep mixing it. अब आपने इसको बस stir करते रहना है. Make sure that flour के clumps ना बने. So keep stirring it. Great. See, flour डालने से, if you guys can see, ये पूरा का पूरा batter अलग हो गया है from the pan. This is done, nice and smooth. इसको cool करना है for a little while, guys. जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसमें 4 अंडे तोड़ के डालेंगे. अगर गरम में डालेंगे तो अंडे कुक होना शुरू हो जाएंगे and you don't want that. So let this cool on the side and we are going to break 4 eggs. A little bowl. I think I'm going to transfer this into my bowl. और फिर रखते हैं इसको. Yeah. Big glass bowl. There. This is cooling. Let's break the eggs. So remember I was talking about how जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतरी के लिए होता है. I remember एक फिल्म थी जो मुझे ऑफर हुई थी और मैंने किसी की एडवाइस ली और नहीं की. तो जब फिल्म बन रही थी, the cast was amazing और मुझे पता चला कि बहुत ही सेट्स भी बहुत अच्छे हैं और गाने भी बहुत अच्छे हैं. So I was really sad and stressed कि भाई क्यों नहीं की वो फिल्म. तो मुझे बहुत सैडनेस और स्ट्रेस था थ्रू आउट जब वो फिल्म शूट हो रही थी. पर जब वो फिल्म बन गई तो उसके बाद वो शेल्फ हो गई एंड इट नेवर गॉट रिलीज्ड. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि जो भी हो रहा होता है ना उसमें कोई बेहतरी होती है. फॉर एन एक्टर सबसे जो एक पेनफुल और हार्ट ब्रेकिंग चीज़ होती है वो ये होती है कि आपका काम जिस पे आपने इतनी मेहनत की हो, इतना टाइम इन्वेस्ट किया हो, वो कभी कोई देख ही ना सके. So, okay, this is ready to pour in. ये इकट्ठे नहीं मैं डालूंगी. I'm going to put like half the mixture. और फिर इसको हम beat करेंगे with an electrical beater. Okay. अब let's put the rest of the egg mixture and beat that. And this is done. इसको निकालते हैं. Put this on the side and our choux pastry is ready. अब मैं इसको spoon out करूँगी into a baking tray and I'm using a regular baking tray. किसी भी size की use कर लें. You don't need to take care of the size. और metal tablespoon से इसको मैं spoon out करूँगी. And let me just tell you before I do it. मैं इसको about 2 inches apart place करूँगी क्योंकि जब ये बेक करेंगे तो ये थोड़े से फूलेंगे and we don't want them joining together. So I think you can fit about 6 in here. So let's do this. Right here. If you have a bigger baking tray, by the way, आप और ज़्यादा cream puffs बना सकते हैं. Another name for cream puffs is eclairs, जो बचपन में हम बहुत खाते थे. I mean, मैं तो बहुत खाती थी. हम उनको eclairs कहते थे. So this is the same thing. And make sure that you use very, very good quality मैदा, like Sunridge मैदा. आप grocery shopping जाएं. By the way, I love doing groceries. So मैं तो खुद ही जाके लेती हूँ. कभी कभार emergency में you have to order some things. या जब lockdown हुआ था, so ordering was, like a real savior. तो इसको थोड़ा सा neat करते हैं with another spoon.
I'm gonna obviously add a little more. ये मैं उसका बेस ठीक कर रही थी उसकी शेप को. अच्छा मेरा कुछ बैटर बच गया है, but that doesn't matter. अभी मैं सिर्फ 6 बेक कर रही हूँ because I'm not going to eat so many. And you can store the rest of it in the fridge. आप इसको दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So let's pop these in the oven. There they go. ये कोई 30 minutes के लिए बेक होंगे. And make sure guys कि आप oven को मत खोलें before 20 minutes. अगर आप 20 minutes से पहले oven को खोल के check करना शुरू करेंगे, your cream puffs might not rise, वो flat हो जाएंगे. So 20 minutes के बाद oven खोलें and then you check if they're done or not. So 20 to 30 minutes is your baking time. I'm going to clean up my kitchen in the meantime. I think my cream puffs are done. Yes, they are. A nice camel color. Ooh. और किचन में इतनी अच्छी स्मेल आ रही है. I love it. See? This is how they should look. थोड़े से cracks भी ऊपर हो सकते हैं, of course. The smell of baking in the house. Oh, so uplifting. इनको ठंडा करेंगे and in the meantime, let's make our cream filling. Cream, vanilla essence and icing sugar, powdered sugar, same thing. Sunridge sugar को powder करके रख लें and fresh strawberries. So I'm using these, like I said, आप कोई भी fruit use कर सकते हैं. Fresh fruit नहीं है तो canned fruit use कर लें. I'm not a big fan of that. But you can mix fruit, anything. Mangoes are amazing, by the way, in cream puffs also. Okay, we're putting in 1 cup. A little more. I mean, इसको तो आप अंदाजे से भी डाल सकते हैं. It's not an exact thing. 1 teaspoon of vanilla essence. This is 1 teaspoon. And 1/4 cup of sugar. ज़्यादा sweet नहीं रखी मैं. Because you don't need it to be too sweet, you know. Strawberries भी हैं, mangoes डालेंगे तो sweet होंगे. It depends on what fruit you're using. Now let's whip the cream. Done. Nice and light. Okay, इसको हम slice करेंगे. You slice it gently. Make 2 halves. Be careful. See? Wow. This is how it looks from the inside. And for the topping, I'm using dark chocolate. इस तरह chop करके मैंने रखी हुई है. जल्दी से microwave में डालूंगी to melt it for I think about 30 seconds should be enough. Let's pop it in. It should be on reset 0. Melted chocolate right here. We need a tablespoon to take the cream out. Basically, ये एक sandwich की तरह है जिसमें आप filling डाल रहे हैं. Ooh, I didn't chop the strawberries. Okay. Should be good. Finishing touch. Chocolate. Ooh, chocolate थोड़ी सी मेरी harden होने शुरू हो गई है because it's been lying outside for a while, but just right to go on the last one. Ta-da! All my cream puffs are ready, and now I'm going to try one of them. कभी-कभी you have to forget everything else and spend time with yourself. अपने mind को बिल्कुल clear कर देना होता है. Because life के stresses तो चलते रहेंगे, but you have to choose happiness. Because I believe that everything works out in the end. और अगर आप
जो चीज़ नहीं हुई या जो पास्ट में चीज़ें हैं उनका स्ट्रेस लेते रहेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू एन्जॉय द प्रेजेंट एंड यू वॉन्ट बी एबल टू प्लान फॉर द फ्यूचर. तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू पुट ऑल माई स्ट्रेसेस ऑन द साइड एंड जस्ट स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ एन्जॉइंग माई क्रीम पफ. आप लोग भी ज़रूर ये ट्राई करें एंड आप भी मुझसे शेयर करें व्हाट यू आर गोइंग थ्रू एंड व्हाट यू डू टू गेट आउट ऑफ इट. और अगर ये बेक करें ज़रूर पिक्चर लें, पोस्ट करें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे विद द हैशटैग Sunridge Bake Me Happy. Now I am going to enjoy my cream puff and you guys can go and enjoy whatever you do to make yourself happy. Khuda Hafiz.